जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर आदित्यन जी हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत. वेलकम वेलकम डॉक्टर आदित्यन जी. Today we are going to discuss something big, folks. Okay, let's talk with Dr. Adityan ji. Free Pakistan visa for Sikhs in US, UK and Canada. Okay, uh, conspiracy to blow up India. Geopolitical expert Dr. Adityan ji will say us what is happening on the back end. you know just watch. If you have any question, put it together, and it's going to be a lot of things are happening. Our question is, are the five eyes in overdrive? Okay, that's our question here. But before getting started, friends, please make sure to like the video, comment on the video, share the video with as many people as you can. And also, friends, please make sure to subscribe the channel Bharat Marg, and also press the notification bell to stay connected. And we are also involved in many of the services like Sanskrit teaching, Vedic mathematics teaching, service in Kumbh Mela, and matrimonial service. All our services, folks, are free. Okay, we don't charge you anything. We only take dan. That's a goal we work with. And do support us if you like our what we are doing. Share this video, and also press the notification, and also make sure to support us by donating us. Okay, you can do that by going to bharatmarg.com and press donate now and donate there. Or you can contact us by the WhatsApp. The number is here. You can also get one dharmic message every day and donate us and support us too. Okay, Dr. Adityanji, welcome to you. Thank you very much indeed, Sundar Bhai, for inviting me on Bharat Marg once again. And we are going to have... ये बोलिए भाई साहब. I just will continue. Dr. Adityan ji will continue in Hindi, and I'll ask questions in English so that we can cover both. And friends, we are going to cover both in English and Hindi, so watch out. And Adityan ji, free Pakistan visa for Sikhs in US, UK and Canada. Conspiracy to blow up India. How is it? How do you see it? What is this happening here? पाकिस्तान का निर्माण भारत को विभाजित करके भारत को कमजोर बनाने के लिए किया गया था, और ये उपनिवेशवादी शक्तियों की प्रोजेक्ट थी. इनकी ये स्कीम थी कि अगर भारत को स्वतंत्रता देनी भी है तो इस तरह से दी जाए कि वहाँ पे अपना कुछ ना कुछ अस्तित्व बना रहे, अपना प्रभुत्व बना रहे किसी भी संस्था के द्वारा. तो इस वजह से पाकिस्तान का निर्माण किया गया था 1947 में. और आप देखते रहिए कि 1947 से अब तक ये जो उपनिवेशवादी शक्तियां हैं, पहले तो ब्रिटेन, फिर अमेरिका, और अमेरिका के पिछलग्गू देश जो फाइव आइज के हैं, पंचनेत्र, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. ये जो 5 राष्ट्र हैं, ये हैं एंग्लो सैक्सन राष्ट्र, जो सफेद चमड़ी वाले राष्ट्रों के हितों का रक्षा करते हैं. और इन 5 राष्ट्रों ने 1947 से पाकिस्तान को एक तरह से वैचारिक और सामरिक संरक्षण दिया है और उनका समर्थन किया है. और 1971 से जब पाकिस्तान को भारत ने विभाजित, खंडित कर दिया था 2 भागों में, पाकिस्तान का यही प्रयास रहा है कि वो भारत का विघटन करे. तो उसमें चाहे वो जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों का समर्थन देना या खालिस्तान प्रोजेक्ट को समर्थन देना, पाकिस्तान ने किया है 1971 के पश्चात बदले की भावना से. और उनके जो भी कदम होते हैं, जो भी वो निर्णय लेते हैं, वो भारत के विरुद्ध होता है. आप जानते हैं कि पंजाब के राज्य में उन्होंने काफ़ी आंदोलन चलाए थे, काफ़ी विद्रोह और विप्लव किए थे
1980 में, 1970-80 के दशकों में, और उसके बाद ये जो अलगाव वाली शक्तियाँ थी वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि भारत में रहने वाले सिखों ने ये महसूस किया कि ये उनके हित में नहीं है। ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान द्वारा समर्थित एक प्रोजेक्ट है, और उसमें जो सिख भाई हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है बहुत ही निकृष्ट भावना से, बहुत ही निकृष्ट उद्देश्य से। तो भारत में जो सिख हैं उसमें 99% इस समय खालिस्तान के विरुद्ध हैं, क्योंकि उनको भारत में सारी छूटें, सारी स्वतंत्रताएं हैं। वो किसी भी उद्योग में जा सकते हैं। वो भारत की सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक सिख महोदय तो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनका उसमें कोई ऐसी अलगाव की बात नहीं है। लेकिन जो विदेशी सिख हैं, जो सिख कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में बसे हुए हैं, उनको एक तरह से बरगलाकर पाकिस्तान ये खालिस्तान की प्रोजेक्ट को जिंदा किए हुए है। तो उसी प्रोजेक्ट का ये एक चरण है, जिसको बोलते हैं ना, इस श्रृंखला की एक कड़ी है, कि पहले तो आपने एक आंदोलन करवाया अलगाववादी और आतंकवादियों को समर्थन किया, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। फिर धीरे धीरे आपने पाकिस्तान में इनको निमंत्रण देना शुरू किया। पाकिस्तान में आपने जो गुरुद्वारों को ध्वस्त कर दिया था, जिनका मतलब निरादर किया था, उनमें ये विदेशी सिखों को उन्होंने बुलाना शुरू किया, उनका पुनर्निर्माण किया। तो अब पाकिस्तान ने फ्री वीज़ा देने का ऐलान किया है, ऐसी घोषणा की है। ये सिर्फ एक तरह से ये कह रहे हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में पर्यटन को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। और सिर्फ ये सिखों के लिए नहीं है फ्री वीज़ा। ये जो फ्री वीज़ा है ये 124 राष्ट्रों के नागरिकों के लिए दिया जाएगा, ताकि पाकिस्तान में पर्यटन के द्वारा आर्थिक विकास किया जाए। तो कहने के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है किसी भी राष्ट्र के लिए कि आप पर्यटन का विकास कीजिए, तो उसमें आपको जो अतिथि आएंगे, पर्यटक आएंगे, वो वहाँ पे पैसा खर्च करेंगे, तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ही समर्थन मिलेगा, बहुत ही सपोर्ट आएगा। लेकिन इसमें इनकी मंशा क्या है ये देखना है। तो कह रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड के जो सिख्स हैं, सिख नागरिक हैं, उनके अलावा वो भारतीय सिखों को जो इन देशों में बैठे हुए हैं और इन देशों की नागरिकता नहीं ली है, उनको भी फ्री वीज़ा देंगे। और उनकी मंशा ये है कि 10 लाख सिख धर्म के अनुयायियों को हर वर्ष पाकिस्तान में पर्यटक के रूप में निमंत्रित किया जाए। और ये जो वीज़ा की जो स्कीम इन्होंने घोषित की है, इसमें कहा गया है कि प्रति वर्ष एक व्यक्ति कम से कम 10 बार तक आ सकता है पाकिस्तान में। अब सोचिए कि कोई कनाडा में बैठा है, पाकिस्तान हजारों मील दूर है, जो व्यक्ति 10 बार आएगा हर वर्ष, उसके पास कितना पैसा होगा? This is wow, 10 times. Dr. Adityanjee, you are saying the free visa is given only for the Sikhs, irrespective of their citizenship. Yeah. Okay, if they are applying from US, Canada, or UK, and they can come up to 10 times. Okay. तो अगर किसी ने, देखिए, पर्यटन भी करना है या धार्मिक पर्यटन करना है, जैसे सिख गुरुद्वारों में जाना है, ननकाना साहब में जाना है, करतार साहिब जो दरबार साहिब का गुरुद्वारा है, वहाँ जाना है,
तो आप जाएंगे, एक बार उधर जाएंगे से तो इन लोगों को भगाया गया, तो उधर अभी भी दंगा हुआ करतारपुर। बार बार बुलाने से क्या होगा? किस लिए? उसकी मंशा ये है कि कुछ सुनियोजित तरह से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। मंशा है ये, ऊपर से दिखावा ये है कि हम पर्यटन के लिए कर रहे मैं हैं। अच्छा, यू नो एक बात मैं आपको और बता दूं कि 1947 में जब विभाजन हुआ था तो उस समय पाकिस्तान ने सिखों को भी मार दिया था। ज्यादातर जो सिख पाकिस्तान में थे उनको या तो मार दिया गया या भारत उनको भागकर आना पड़ा। बहुत ही कम सिख बचे थे पाकिस्तान में, और जो भी थे वो उनके जो खाइबर पख्तूनवा प्रांत है उसमें थे, बचे थे, क्योंकि पंजाब से तो उन्होंने उनका सबका सफाया कर दिया था, सबका नरसंहार किया था। ये मेरे कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। उसके बाद जितने भी गुरुद्वारे थे पाकिस्तान के पास, उनको जो उनका प्रबंधन करता था वो था एसजीपीसी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वो भारत में अमृतसर में बेस्ड थे। तो जो भी धार्मिक यात्री जाते थे पिलग्रिमेज के लिए, वो वहां पे चढ़ावा देते थे, और वो चढ़ावा वहां से फिर एसजीपीसी के लोग, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग भारत लेके आते थे। तो पाकिस्तान को ये बात स्वीकार नहीं थी कि वहां पे जो चढ़ावा आएगा गुरुद्वारों में वो भारत जाए। तो उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने एक समिति बनाई, पाकिस्तान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। उसको बनाने के पश्चात जो भी चढ़ावा आता था वो पाकिस्तान में ही रहता था। अब आप करतारपुर का जो गुरुद्वारा है उसमें देखिए, तो उसमें एक साल में कम से कम 36 मिलियन अमेरिकन डॉलर का चढ़ावा आता है। अब वो सारा कहाँ जाता है? अब वो पाकिस्तान में रहता है। उसका क्या उपयोग किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, खालिस्तानियों को ट्रेन किया जाए। Dr. Adityanjee, I want to stop you here, please. Okay, if what you are saying is true, if this is being used against India, then it is the Hindu nationalist government of Modi which opened up the corridor for them. Then why did they do that? I can tell you why they did that, because there is a strong sentiment in Bharat-based Sikh community about this particular Gurdwara, and there was a popular demand. Now, this Gurdwara is only 4 kilometers away from India-Pakistan border, and is unfortunate that at time of partition, the then government did not take into consideration the location of this particular Gurdwara, which should have come under Bharat at the time of division. Now, we are facing with situation, so Modi government created a corridor by which Sikhs from Bharat can go and visit in the same day or in 2-3 days, and Pakistan charges Indian Sikh citizens $20 for visa, and that's how they make money. And Bharat has demanded that this visa fee be waived off. वो free नहीं है. वो free नहीं है, वो free नहीं है. अगर if the Indian Sikhs are based in America, they are Indian citizens and they are Indian Sikh, then they will get free visa. But Indian Sikhs who are based in Indian Punjab or Haryana or Rajasthan or Delhi, if they go to uh, Kartarpur Gurdwara, they have to pay $20 visa fee. So Pakistan is having both ways. And you asked a very legitimate question. I have a very legitimate answer. If next time there is a conflict between Bharat and Pakistan, Indian government should take over this Gurdwara. It's only 4 kilometers away. Pakistan has no locus standi. Pakistan is a theocratic Islamic state. And a Sikh Gurdwara does not
deserve to be under control of a theocratic, jihadi, radical terrorist state. नहीं नहीं, आप आदित्य जी, आप तो इतना अच्छा बात करते हैं, मैं मानता हूं आपका बात, है ना। फिर भी ये क्या अमेरिका का ब्लेसिंग के बिना जाती है क्या? ऐसा होता है क्या? देखिए बात तो यह है, यू आर गिविंग फ्री पास फॉर अमेरिका? Pakistan has got free pass from America, Pakistan has got free pass from Canada, Pakistan has got free pass from UK. Let me be very clear about it. Now, Canadian government and Justin Trudeau is creating all this noise about gang warfare related murder of a Sikh Canadian terrorist. Okay, I'm not going to take the name. But same Justin Trudeau has not uttered a word about murder of a Baluch activist, Karima Baluch. करीमा बलोच, या? And it was shown by Mounties, the RCMP, and it was declared that her death was by suicide. Whereas her own husband says that it is not suicide, there was a conspiracy, there were ISI agents that were behind her. And also keep in mind one thing, Adityanji. I know Karima Baloch, okay? And when she was living here, she couldn't even make the ends meet. This Canadian government made sure she never has a peaceful life. So Canadian government is having double standards. On one hand, they are giving political patronage and protection to Sikh Canadian terrorists. These are, I don't want to use the K word because there's no country by the name K word. ये एक कैनेडियन टेररिस्ट है ये, If it is बिल्कुल। there, it is in Brampton, Canada. But these are Sikh Canadian citizens. These are Sikh Canadian terrorists. And Justin Trudeau, because of the vote buying politics, to keep his government alive, keep his government in power, and possibly wanting to win the next election, which he is sure to lose, and has to keep appeased NDP leader, whatever Dhaliwal he is. Okay. So you are seeing very blatant actions by Canadian government, by Canadian police agencies, by Canadian border security agency that has actually promoted a terrorist into the rank of superintendent. It means अभी भी हुआ है दंगा में। See, you see here, we just did a expose in the morning, okay? पुलिस तो छिप रहे थे भीड़ के अंदर, you know, तो फिर उनको पकड़ा गया, you know, ये you know, Aditya ji, but I have a question here. What we are hearing here, okay, I'll say you from our sources, what we are hearing is the Indian government is watching this very keenly. Probably many of these guys will get their OCIs cancelled, if not already done. That is going to happen. You cannot have it both ways. You cannot terrorize, people of Indian origin or people of Hindu faith and, create mayhem and, put bullet targets for Indian High Commissioner or, put an effigy of the Prime Minister or whatever and indulge in your successionist or anti-India activities. And yet Absolutely. you are able to maintain your properties in Bharat. That is not going to be possible. So those Sikh Canadian terrorists who still have property in Bharat and who have OCI status. Means even in US, even Yeah. in US, Yes, US, UK, whether it is in US, whether it is in Canada, whether it is in Australia, whether it is in UK, government of India has become more assertive. They are not going to take terrorist attacks on India lying down. So if you are traitor absolutely. to India, you have no business to have OCI status.
But Mera, I have this question to you, Dr. Adityanji. Now, what you are saying is, if there is a Indian citizen Sikh Hmm. comes here and gets a visa and goes there, okay, 5 time, 10 time, get brainwashed, get all the needed fulfilled, need fulfilled, and they are going back to India. Now, for those who are not citizen of India, India can cancel the OCI. What India can do for these guys? So if you have an Indian passport holder, and let's say you have a permanent resident status in United States, and you are going to Pakistan, let's say 10 times a year, the questions will be raised as to what was the purpose of visiting Pakistan 10 times in 1 year with free visa. Were you But part? if I am a visitor who comes and goes to Pakistan, Let me finish this first. yes, yes, please. So you are going either for religious purposes or you are going there to visit your family. Hmm. You can do that once a year. You can have, let's say, extended trip for 5 weeks or something like that, because from US or Canada going to Pakistan costs you money. If you are doing repeatedly, there is some shady activity going on. Maybe you are being trained. Now, every time you will enter the state of Pakistan, your visa would be stamped. And if Indian government realizes that as an Indian citizen is visiting Pakistan, ostensibly for religious tourism, but your visa, your passport has been stamped by entry and exit visas from Pakistan 10 times in a year, it's going to raise red flags. And the government machinery will take whatever action is required. You know, they But will but have to take action. but Dr. They Adityanji, monitor such individuals. but Dr. Adityanji, my question is, if I have Indian citizenship, I come here and get a visa, free visa for 10 times, then I travel from in the religious name. I go from India, crossing there. What happens then? Well, the thing is that every time you go, your visa would be, your passport would be stamped. And that information would be with Indian government. So they will have to take some action. Absolutely, The passport is property of government of India. It's not property of one individual. Any passport is not your personal property. It's the property of the sovereign state. And if that passport, which is a legal document of government of India, has certain suspicious activity recorded, government or the investigative agencies will have to take action. What action, that I cannot tell you because that depends upon individual case. absolutely, Dr. Adityanji. It was great pleasure talking to you. But if you want to say anything, last in 30 seconds, sir. I think people have to see what is the facade. The facade is religious tourism, but behind that there's a sinister activity, a scheme to train terrorists in camps in Pakistan for indulging in anti-India activities. And that is the unstated reason this scheme is being introduced. So you can never trust Pakistan, whether it is Kashmiri separatism or successionist movement in Punjab. So stay tuned because Pakistan is not going to give it up. And you know, Pakistan, everything is controlled by army. And if you looked at the news today, well, Pakistan's parliament has extended the tenure of chief of the army staff from 3 years to 5 years. So what is going to happen? That the de facto ruler would be the chief of the army staff. A government will last for 5 years and the chief of the army staff will also be appointed for 5 years. So ultimate power will remain with the chief of the army staff. And ISI and GHQ project is to destabilize India, to break India, and this is one of their activities. You can see Absolutely. it through it.
Dr. Aditya, thank you very much for coming here and sharing your wisdom. Appreciate it very highly, sir. And looking forward to seeing you again in the next video. Friends, what do you think about the free visa for Sikhs in US, UK, Canada, and conspiracy to blow up India? Do you agree with what Dr. Adityanjee says? Or you have any input? Do comment us and let us know. We will love to hear what you are thinking, and we're looking forward to seeing you in the next video. Till then, Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. Thank you, Dr. Adityanji. Hare Krishna. Thank you, Sundar Bhai. I hope the Hindu community in Canada remains safe. And बटेगा तो कटेगा बस. Thank you, Dr. Adityanji. Hare okay. Krishna.